Hello students, welcome to you in my YouTube channel Learn Math with Arshad। आज हम इस वीडियो में सेकेंड 2/7/23 2 जुलाई 23 का वर्कशीट सॉल्व करने जा रहा हूँ। दैट वर्कशीट बिलोंग्स टू चैप्टर 3 और worksheet will be available in description, so you can download worksheet from there। इसका पहला क्वेश्चन है find the values of k for which the pair of linear equation has infinitely many solutions। पहला इक्वेशन है kx प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर, सेकेंड है x प्लस के वाई इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये दोनों इक्वेशन सेम फॉर्म में है कि नहीं है। x लेफ्ट साइड, y लेफ्ट साइड, कांस्टेंट टर्म राइट साइड, x लेफ्ट साइड, y लेफ्ट साइड, कांस्टेंट टर्म इन राइट साइड। So both equations are in the same form. Then we will recall condition for which pair of equation have infinitely many solution. That condition is, in examination we will write like this: they have many solution, they have infinitely many solutions. So what is the condition? a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। तो हाफ मार्क्स तो आपको इसी से मिल जाएंगे। उसके बाद देखो x को कैंसिल करो, यहाँ तो यहाँ k मिला, यहाँ 1 मिला, यहाँ 1 मिला, यहाँ k मिला, एंड दिस इज k स्क्वायर बाई 1। तो इन दोनों को लेके हम सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k स्क्वायर इक्वल टू 1, सो k इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये सही है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जब लिखेंगे तो हम कोई आंसर ऐसा नहीं लिखेंगे कि बाद में पता चले कि गलत हो जाए। सो हियर k, इफ k इक्वल टू 1, सो वी विल चेक दैट ऑल आर इक्वल और नॉट। सो 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1। if we are taking k equals minus 1, so here minus 1 by 1, here minus 1 by 1, and here 1 by 1, because it is k square. So therefore k equal to 1 is the correct answer, because for minus 1 all ratios are not equal. Now second question in this worksheet is represent the system of linear equation this and this graphically। so इसके हम सिर्फ आपको solutions बता देंगे to represent a linear equation। graphically we need at least 3 solutions। so first equation is 3x plus y equal to 5, and second equation is 2x plus y equal to 5। so 3 solutions। मैंने देखा कुछ बच्चे 2 solution लेते हैं, तो 2 मत लेना बोर्ड में, because if there are 2 points always you can draw line। if there are 3 points you can draw a line or you cannot draw। if points are collinear you can draw, if points are non collinear you can't draw। so देखो बेटे, यहां मैं y को सब्जेक्ट बना लेता हूं, यहां भी y सब्जेक्ट हो गया, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल। सो हम डायरेक्टली इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, तीनों सॉल्यूशन। x y, यहाँ x 0 लिया, y 5, यहाँ 1 लिया, 3 1 जा 3, 5 minus 3 2, 2 3 2 जा 6, 5 minus 6 is minus 1। here x and here y, here x 0, so 5। so it is a common solution, so this will be the solution of this pair of equation। x 1 ले लिया तो 3 आ गया, 1 3, 2 ले लिया तो 1 आ गया। then draw these 2 lines। first you locate these 3 points and draw line। okay, write the name of this line, then you locate these 3 points and draw line, write the name of line। these 2 lines they will intersect each other,
then that point will be the solution. So for that point, write the coordinate, that will be the solution. Now question number 3. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बहुत आसान चैप्टर है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑलरेडी डिलीटेड है. Then substitution and elimination method is there. So it's easy to do by elimination method. That's very simple. Elimination method, and the second thing, question based on condition, and the third question, word problem. So only 3 types are, and graphically 4 types of questions are here. So now next question, word problem. 4 chairs and 3 tables cost 2100 rupees. 5 chairs and 2 tables cost 1750. Find the cost of 1 chair and 1 table. It came in board examination 2016 in Delhi paper. So let the cost of a chair be X and the cost of a table be Y. As per as question, here you can write according to question. 4 chairs, so 4x, 3 tables, so 3y, total cost is 2100. Next, 5 chairs, so 5x, 2 tables, to 2y, and it is 1750. It is equation 1, it is equation 2. And now we will solve it by elimination method. So before making coefficient equal, you have to decide which variable you want to eliminate. So here x both are positive, here both are positive. So in both equations, variables, they have same sign, it means we have to subtract. After making equal coefficient, we have to subtract. So I decided I will eliminate y. So now first equation is multiplied by 2 minus second equation is multiplied by 3. So 2 4s are 8, 3 2s are 6y and 4200, and 5 2s are 10x, 5 3s are 15, because second equation we are multiplying by 3. 3 2s are 6y, 0 3 5s are 15, carry 1, 3 7s are 21 22, 3 1s are 3, 2 5. When we are subtracting, no, जब subtract करते हैं तो second equation के हर टर्म का साइन चेंज कर देते हैं. प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे. तो ये कैंसिल हो गया. अब ये आया 7x. अब देखो ये 5250 4200 सब्ट्रैक्ट करो, 050 1050 माइनस माइनस कैंसिल. सो x इक्वल टू 1 this by 7. 7 1s are 7, 3, 7 5s are 35. So x is 150. Now you substitute the value of x in one of the equation, चाहे आप फर्स्ट में रख लो चाहे आप सेकंड में रख लो. तो हम देखेंगे कौन सा इक्वेशन में नंबर्स कोएफिशिएंट छोटे हैं, हमें x की वैल्यू रखना है. हम यहाँ रखेंगे क्योंकि देखो ये इवन नंबर है. तो 5 into 150 plus 2y equal to 1750. 750 plus 2y equal to 1750. So 2y equal to 1750 minus 750. So 2y equal to 750 minus, you subtract it, you will get 1000. So y equal to 500. After that you can conclude your answer. Cost of a chair is rupees 150 and the cost of table is rupees 500.